Hello everybody, welcome to iExamB's Legal Beat. This is Amrita, your law faculty here at iExamB. Embrace the iExamB learning experience, and for that what you have to do, don't forget to subscribe to our YouTube channel first. For law, we have an exclusive Legal Beat channel, which is exclusive YouTube channel, especially for law exam related updates, content, strategic preparation videos and whatnot. अगर आप कोई भी अपडेट्स मिस नहीं करना चाहते, कोई भी कंटेंट मिस नहीं करना चाहते, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल. इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है, you can reach out to us by writing us an email on hello@exambi.com. Call us on the number 9205524028. Visit our website www.iexambi.com. iexambi के वेबसाइट पे जाने के बाद आप काफ़ी सारे कोर्सेज चेकआउट कर सकते हैं for all the examinations which are relating to various sectors, banking sector, and especially if we talk about law. After law, we have so many examinations which we are catering in the online mode. So you can check out all the courses. You can check the demos of all the courses if you are interested in any of the examinations. So don't forget to subscribe, stay updated. आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ, एंड उससे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, हैव यू जस्ट डन योर LLB और यू आर इन योर लास्ट सेमेस्टर ऑफ योर LLB, दैट इज योर फाइनल ईयर. अगर आप फ्रेश लॉ ग्रेजुएट के कैटेगरी में आते हैं, देन डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट होने वाला है. अगर आप फाइनल ईयर में भी हैं, सपोज इन योर लास्ट सेमेस्टर, then definitely you have to be on your toes now, because you have taken LLB, you have taken the LLB course, you have completed it, you have just completed it, or you are about to complete it, you are on the verge of completion. So अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि अभी भी आप सोचते रहें कि आपको क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, और उसमें आपका LLB कंप्लीट हो जाए, उसके बाद भी आप सोचते रहें and you are not on one particular solution. Or it may happen that you want to do many things, but you're not able to decide what. These are the things which are going to be in your mind. That is obvious as you are fresh law graduates or you are in the last semester. You're not able to determine exactly आपको करना क्या चाहिए. अगर आपके इंस्टीट्यूशन में प्लेसमेंट्स आ रहे हैं तो प्लेसमेंट्स के लिए जाना है, नहीं जाना है, कोर्स ज्वाइन करना है, कोर्स ज्वाइन कर रखा है तो उसमें कंटिन्यू करना है, या जॉब के लिए जाना है, या जुडिशरी के लिए जाना है, या और कोई एग्जाम्स के लिए जाना है. तो ये सारे क्वेश्चंस LLB करने वाले हर फ्रेश लॉ ग्रेजुएट या फाइनल ईयर स्टूडेंट में ये क्वेश्चंस होते ही हैं. सो आई थॉट दैट आई शुड टॉक टू यू पीपल अबाउट दिस, आई शुड एड्रेस यू पीपल ऑन दिस. So let us discuss what all are the upcoming opportunities, or we can say not upcoming, but these are the obvious streams which you can do after your LLB. These are the opportunities which are there for you after your LLB. Maybe the exam notifications or the job openings or everything comes sometime or the other after you complete your law, but these are there, these are the fields which you have after your LLB. So आपको किस मार्ग पे चलना है, आपको कौन से डायरेक्शन में जाना है, all these things are the ones which you have to decide depending upon various factors in which your interests do matter, and at the same time your economic interests also matter. Don't feel ashamed or don't feel awkward if you are accepting this fact that economic interests do matter. Yes, it does matter, and of course your liking and your interests matter. So all these things will be determining that what will be your career. So उस हिसाब से आपको अपने अपॉर्चुनिटीज़ को पहले समझना होगा, सारे स्ट्रीम्स को समझना होगा. एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जो डिस्कशन करने वाली हूँ वो सिर्फ स्ट्रीम्स के बारे में नहीं होगा. आई विल ऑल्सो टेल यू अबाउट द रेलिवेंट एग्जामिनेशंस विच यू विल हैव टू टेक अप फॉर ऑल दीज फील्ड्स वन बाय वन. सो डू watch this video till the end. अगर कोई भी queries है, we are there to help you. You can also write to us in the comment section of this video. Download the PPT, keep it with you for your reference. So these are the n number of opportunities which you can see by a pictorial representation in this particular slide. You can see first, of course, you become an advocate, but are you a lawyer? What is the difference between a lawyer and an advocate?
An advocate is the one who holds an LLB degree, which all of you will be having or are already having. But are you a lawyer? If you are practicing in the court, if you are having all those litigation skills in you, then definitely you become a lawyer. So that is the basic difference. But yes, everybody does not want to become a litigation lawyer. Many of you want to become in-house lawyers, you want to become solicitors, you want to become banking professionals, banking lawyers, you want to do your LPO work, your corporate law jobs, you want to go into teaching, you want to go into research, you want to go into judiciary, you want to become a judge. All these things are the opportunities which you have. And I don't think that any other career is having such kind of inbuilt opportunities in itself. There are various other professions, बट उन प्रोफेशंस के बाद या तो लोग प्रोफेशंस चेंज करते हैं या उसी में बेसिक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस या ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स में रहते हैं. बट LLB एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपको डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज़ है, बट द पीपल आर नॉट नोइंग अबाउट इट. इस वीडियो में हम लोग एक बेसिक एनालिसिस करने वाले हैं कि कौन से स्ट्रीम्स हमारे पास हैं, एंड वो स्ट्रीम्स आपको एक मैं डायरेक्शन बता दूंगी कि अगर सपोज लीगल असिस्टेंट है तो ये लीगल असिस्टेंट आपको कई जगह पे मिलता है, तो इसके लिए आपको कैसे अप्रोच करना है और वो एक्चुअली उसका मतलब क्या है. एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट लिटिगेशन तो फिर उसका कैसे उसके क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं. सो ऑल दीज थिंग्स वी विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, एंड ऑफ कोर्स आई एम रेडी टू हियर योर क्वेरीज एंड सॉल्व देम ऑल्सो. Do reach out to me if anything is there in the comment section of the video. So now first thing you have to understand, again don't be confused, and इतने सारे opportunities मैंने आपके सामने already अभी रख दिए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप confuse हो जाएं. You have to make yourself sorted. It is but obvious that you are going to be confused, but the more you are sorted, the more you will be successful, and the fast you will be successful. Remember that. So try to clear all your doubts in this video today. Litigation. What are the requisites for litigation? All India Bar Council examination, that is AIBE, it is a prerequisite क्योंकि एक license to practice है and ये compulsory है. Going to the AOR, that is the Supreme Court Advocate on Record Examination, ये आप तुरंत तो नहीं दे सकते, मीन्स जैसे ही आप पास आउट हो जाओ वैसे तो नहीं, लेकिन अगर कोई लिटिगेशन में जाना चाहता है तो उसको ये एग्जामिनेशन के बारे में भी पता होना ज़रूरी है. AIBE तो आजकल कंपलसरी है, सबको पता ही हो गया है. It's an open book examination. You can take your barracks and you can give that examination, and definitely you need a EIB pass certificate for your practice, that is your license to practice. तो ये तो mandatory है. तो जो litigation में जा रहे हैं उनको तो ये compulsory है, उनको अपने बार में रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ, एंड उसमें उनका स्टेट का रजिस्ट्रेशन भी हो जाता है. एंड रिमेंबर, अगर आप लिटिगेशन के साथ अगर मेन फोकस एग्जाम्स पे रख रहे हैं तो भी मैक्सिमम एग्जामिनेशंस में एक्सपीरियंस इन लिटिगेशन या रजिस्ट्रेशन विद द बार का क्राइटेरिया होता ही है. सो प्लीज़ गो फॉर इट. Go for it. Don't think about anything. If you are interested in exams also, then also register yourself. I would suggest you people. And AOR का जो examination है ये specifically सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बनने के लिए होता है. अगर आप सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, you need to clear this examination. Only then you will be registered as an advocate on record. And yes, in litigation, experience and observation is the key. There is no particular one exam that will make you a lawyer. It is only your white hair. What do I mean by this? Your experience and how you are learning, you are grasping, that is with your observation and your network. Many people don't tell you about this, but let me tell you, network is very, very, very important in litigation. अगर आपके पास नॉलेज है बट आपका अच्छा नेटवर्क नहीं है या क्लाइंट बेस ही नहीं बन रहा है तो लिटिगेशन में सक्सेसफुल होना बहुत मुश्किल है. सो फोकस ऑन दैट, बिल्ड योर नेटवर्क, योर कॉन्टैक्ट्स, then you have to of course give good service to your clients as well and do ethical practice. You should have your professional etiquettes, your professional ethics, all these things. And last but not the least, patience. Litigation requires patience. Even public prosecutor exams do come for various courts, like for example high court के लिए कोई public prosecutor की जगह है, गवर्नमेंट प्लीडर, तो वैसे एग्ज़ाम्स भी आते रहते हैं. CBI APP का भी अभी एग्ज़ाम हुआ था पीछे, दैट इज़ असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन CBI.
तो ऐसे स्पेसिफिक एग्जामिनेशंस भी आते रहते हैं, तो उनका एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट होता है कि इतने ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए एंड देन यू हैव टू राइट दैट एग्जामिनेशन। देन यू हैव जुडिशरी। जुडिशरी में फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स के लिए अगर हम बात करें तो स्टेट जुडिशरी एग्जाम्स होते हैं जो फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स के लिए होते हैं, एंड अगर वो 3 इयर्स का लिटिगेशन एक्सपीरियंस लेकर आते हैं तो भी दे कैन राइट एन एग्जामिनेशन दैट इज नॉट अंडर द फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स कैटेगरी, बट स्टिल फॉर दैट ऑल्सो स्टेट जुडिशरी एग्जाम्स आर बीइंग कंडक्टेड। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए 7 इयर्स के बाद आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है, बट अगर अब जैसे हम इस वीडियो में फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स पे फोकस कर रहे हैं, so this is about the state judiciary examinations, and this is being conducted with the public service commissions. Exam is being conducted with the state public service commissions, and it is quite of a difficulty level. Many of you are trying for judiciary, many of you know about it as well. Many people have dreamed to become a judge, so they can go for it, they can prepare for it. ये भी नोटिफिकेशन बेस्ड होता है, जब रिक्वायरमेंट होती है, जब वैकेंसी होती है नोटिफिकेशन आता है, बट रिमेंबर अगर आपको इस लाइन पे जाना है देन यू स्टार्ट बिल्डिंग योर करियर इन दैट डायरेक्शन फ्रॉम नाउ इटसेल्फ। डोंट वेट फॉर द नोटिफिकेशन, स्टार्ट प्रिपेयरिंग योरसेल्फ। उसके लिए क्या क्या लगता है, कलेक्ट ऑल द इम्पॉर्टेंट डेटा एंड देन स्टार्ट प्रिपेयरिंग प्रीवियस ईयर पेपर्स, मॉक टेस्ट। एंड अगर आप जुडिशरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एग्जाम काफ़ी दूर है, तो डेफिनेटली आपने कोर्ट भी ज्वाइन करना है और लिटिगेशन करनी चाहिए। ये मेरा पर्सनल सजेशन है, बिकॉज दैट इज डेफिनेटली going to help you learn a lot about judiciary, that is practically। लॉ ऑफिसर ये काफ़ी ट्रेंडिंग करियर है आजकल LLB के बाद, एंड इसके लिए काफ़ी सारे डायरेक्ट एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट्स भी हैं काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस में। इनफैक्ट आई एग्जाम इज प्रोवाइडिंग यू मेनी कोर्सेज फॉर दिस। आई विल बी टेलिंग यू अबाउट द कोर्सेज इन द एंड ऑफ दिस वीडियो, डू स्टे ट्यून्ड। बैंकिंग सेक्टर में लॉ ऑफिसर बनना ये काफ़ी एक स्टेबल एंड सिक्योर जॉब लगता है स्टूडेंट्स को आजकल। LLB के बाद काफ़ी सारे लोग इसमें इंटरेस्टेड होते हैं। बैंकिंग, PSUs, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में भी काफ़ी लोग इंटरेस्टेड होते हैं, एंड द रेगुलेटरी बॉडीज, SEBI, it is a very trending career nowadays, and iExamB is definitely providing for SEBI grade A legal officer examination course as well. We have a very successful batch that has recently passed out with 36 selections for the SEBI examination for the interview level. We had our students for that, so definitely all these details you can check it out on iExamB's website. रेलिवेंट एग्जाम्स क्या है? IBPS SO लॉ। IBPS एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो काफ़ी सारे बैंक्स के लिए लॉ ऑफिसर के पोजीशंस के लिए एग्जाम कंडक्ट करती है, और ये हर साल होता है। RBI ग्रेड बी लीगल एग्जामिनेशन, वेरी फेमस, एवरीबडी नोज अबाउट RBI। उसमें ग्रेड बी लेवल की लीगल ऑफिसर की पोस्ट आती है। क्लैट इज देयर। क्लैट यहाँ पे क्यों आ गया? कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। क्लैट की कुछ MOUs है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के साथ, कुछ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के साथ है। सो अगर वहाँ पे भी आपका सिलेक्शन होना है एज अ लॉ ऑफिसर तो क्लैट के स्कोर के बेसिस पे होता है। SEBI ग्रेड A लीगल ऑफिसर एग्जामिनेशन, एज आई टोल्ड यू। सो these are also very famous, and many students are nowadays trying for it. If you require anything related to this as well, you can reach out to us. लीगल असिस्टेंट। अब ये लीगल असिस्टेंट की पोस्ट काफ़ी स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती है। ये ना एक जनरल टर्म है, ये जिस डिपार्टमेंट या जिस इंस्टीट्यूशन में नोटिफिकेशन आता है उसके हिसाब से ये जॉब प्रोफाइल के हिसाब से पोस्ट बनाई जाती है, एंड दिस इज बेसिकली असिस्टेंस बेस्ड। पोस्ट ऑफ लीगल असिस्टेंट इन एनी इंस्टीट्यूशन कैन बी डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन एंड द वैकेंसीज। जैसे अगर कोर्ट है, सपोज लीगल एड है, लीगल एड एक डिपार्टमेंट है, हाई कोर्ट में होता है, हाई कोर्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, वहाँ पे लीगल असिस्टेंट्स की पोस्ट आ जाती है, तो वो लीगल एड के काम में फैसिलिटेट करते हैं, असिस्ट करते हैं। सो लाइक दिस इज एक्चुअली कमिंग आउट डिपेंडिंग अपॉन द इंस्टीट्यूशंस। लीगल असिस्टेंट की पोस्ट काफ़ी सारे गवर्नमेंट सेक्टर्स में आती रहती हैं, एंड सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है ये इंस्टीट्यूशंस पे डिपेंड करते रहता है। इट इज़ नॉट वन एग्जाम। जॉब प्रोफाइल जो होता है उसके हिसाब से लीगल मैटर्स में मैक्सिमम इसमें असिस्टेंस होता है। सो उससे रिलेटेड एग्जाम्स आते रहते हैं। सेपरेट एग्जाम होता है हर एक इंस्टीट्यूशन का, बट एक जनरल आउटलुक अगर हम देखें तो रिटन एग्जाम और इंटरव्यू, ये 2 चीज़ें उसमें होती ही हैं, एंड देन दे ऑफ कोर्स सी योर मेरिट ऑल्सो। तो अगर आप फाइनल ईयर में हैं अभी भी तो ध्यान में रखें आपका लास्ट सेमेस्टर, इनफैक्ट आपके फाइनल ईयर के दोनों सेमेस्टर्स का एग्रीगेट अगर फर्स्ट क्लास में आता है तो बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए। ऐसे एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी अच्छा आपका बेस बन जाता है, ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ और जॉब्स के लिए भी। देन कमिंग टू जैग, व्हाट इज दिस जैग? जज एडवोकेट जनरल।
अगर आप आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं एंड यू वांट टू सर्व एज एन एडवोकेट ओवर देयर, देन दिस इज योर कॉल. JAG is actually a very rare post, but nowadays many students know about it, especially जब से उन्होंने क्लैट का स्कोर एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया था, तो तब से तो काफ़ी स्टूडेंट्स को पता है. फिर भी अगर कोई क्वेरीज हैं, वी आर देयर टू हेल्प यू. सो जैग के लिए एक SSB इंटरव्यू प्रोसेस होता है. पहले वो शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं, देन दे कॉल यू फॉर योर इंटरव्यू. जो इंटरव्यू के बेसिस पे आपका सिलेक्शन करते हैं. SSB इज शॉर्ट सर्विस कमीशन बोर्ड एक्चुअली, जो ये एग्जामिनेशन को कंडक्ट करता है ना. आपकी जो सर्विस होती है वो भी शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होती है, एंड जैसे ये आर्मी के एग्ज़ाम्स और रिक्रूटमेंट्स में होता ही है. सो जैग का जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है जनरली एक साल में तो आता ही है. आप इसके बारे में भी डिटेल्स चेकआउट कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड है. स्पेशली वुमेन के लिए आजकल बहुत स्कोप है, बिकॉज दे आर प्रेफरिंग वुमेन नाउ डेज, बिकॉज वुमेन have become less in this field. But then definitely if you are interested for a short period, SSB में आप ये अप्लाई कर सकते हैं. इसके लिए आपके डॉक्यूमेंट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. रिमेंबर दैट जब भी आप अप्लाई करें, आपके डॉक्यूमेंट्स अगर क्लियर नहीं है तो आपके शॉर्ट लिस्ट नहीं होने के चांसेस होते हैं. अगर आपको शॉर्ट लिस्ट होना है, दे विल रिटर्न यू बैक इफ़ यू आर नॉट हैविंग योर documents, your medical, your fitness, and of course your intellectual capacity is very important over here, because it is all upon your intellect that they will take your interview. Research and teaching. This is something which I like because I am myself into this profession. If you want to become a researcher, you have interest, if you want to join the teaching profession in law, it's a booming career nowadays. LLM compulsory है. अच्छे grades लाना बहुत ज़रूरी है. Go for CLAT, go for various other examinations which are LLM entrance examinations. जैसे अगर आप फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स या ऑलरेडी अगर आप LLM कर रहे हैं तो LLM में फोकस कीजिए. रिसर्च आपके डिसर्टेशन पे काफ़ी ज़्यादा फोकस कीजिए. अच्छे ग्रेड्स लाइए. असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो कॉलेजेस में जगह निकलती है, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. बट उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है वो भी देखना ज़रूरी है. रिसर्च स्कॉलर बन सकते हैं. रिसर्च स्कॉलर मीन्स द वन हु इज़ डूइंग रिसर्च. पार्ट टाइम और फुल टाइम PhD करने वाले लोग रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं. सो दे आर पेड ऑल्सो स्कॉलरशिप्स एंड दे आर डूइंग रिसर्च फुल टाइम ऑल्सो. बट नेट सेट JRF, these are the qualifications which you will have to gather. and पहले LLM होना कंपलसरी है. LLM के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते इस फील्ड में. If you are in your final year of your LLM, then you can appear for NET-SET examination. PhD के लिए भी किस तरीके का प्रोसेस होता है. when you want to do PhD in law, depending on that institution, they are taking out notifications and vacancies. Then you have to go for the PhD entrance examination. Then you have to take up a topic, make a proposal for that. You have to make your synopsis, submit it, present it, give interview, and then if you are selected for those posts or vacancies, then you can enroll yourself for PhD in that institute. So it's a long process. If you have to do it, you have to decide now if you are interested. CLAT PG is important for taking admission to LLM. CLAT के अलावा काफ़ी सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हो गए LLM के लिए भी आजकल. मैंने ना इस रिलेटेड कुछ वीडियोस बनाए हैं जो आप लीगल वी के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं. जो CLAT UG PG के अलावा काफ़ी सारे ऐसे एग्ज़ाम्स, इसी लेवल के जो एग्जामिनेशंस हैं या स्टेट वाइज CETs हैं, उनके बारे में भी आप डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं. So of course you have a good career here, and even if you get the JRF, अगर आप UGC नेट एग्जामिनेशन अच्छे स्कोर के साथ क्वालिफाई करते हैं, JRF भी क्वालिफाई करते हैं, तो आपको फेलोशिप मिलती है. सो इट्स अ वेरी गुड डेवलपिंग करियर नाउ डेज इन दिस एरिया एज वेल. Corporate sector, of course, it goes without saying, many people have interest in this side. You can join any firm. Of course, lawyers are needed. Lawyers are needed, especially in the corporate sector. They need lawyers to save themselves from lawyers. So they want in-house lawyers, they want their own lawyers, or they want their own people who will draft documents for them. यहाँ पे LPOs की भी बात आती है. LPOs are also paying very well, or there are many such kind of institutions who are having the legal officers. So ये पोस्ट के लिए क्या लगता है, पहले हम ये देखते हैं कि कौन से सेक्टर्स होते हैं. मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, intellectual property rights is a very good career nowadays. It is growing very fast. corporate litigation भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट बढ़ रहा है आजकल. सो इसके लिए आपको क्या करना होगा, कोई आपको एग्जाम एक स्पेसिफिक तो हो ही नहीं सकता. द बेस्ट थिंग इज बिल्डिंग योर स्ट्रॉन्ग CV. do courses, do certificate courses, do your skill development courses, prepare yourself,
develop your skills in such a way and have excellent knowledge and confidence. If you have all these things, definitely your chances are there that you will go in the corporate sector. And if you go in the corporate sector once, then definitely your experience keeps on building up, your skills keep on developing up and developing, your knowledge also keeps on increasing eventually. So all these things are there for the corporate sector. Also we do have LLB jobs. ऐसा नहीं है कि corporate sector में LLB jobs नहीं है. Keep this thing out of your mind. All these streams are there after LLB. That's why I tried to make a comprehensive video for you people so that you all understand there are so many opportunities after LLB. Mega P Legal Online course is available at iExamB. इस Mega P Legal Online course में आपको क्या मिलेगा? काफ़ी सारे एग्जामिनेशंस के लिए preparation in one single course, and this is something which is a boon for those who want to prepare for multiple exams at once. ऐसे कई लोग होते हैं जिन्हें काफ़ी सारे एग्जाम्स के लिए ट्राई करना होता है, they want to try their luck, एंड ऐसा तो है नहीं कि जो एग्ज़ाम के लिए ट्राई कर रहे हैं उसी में सिलेक्शन होगा ही. कई बार स्टूडेंट सोचते हैं कि 2-3 एग्जाम्स के लिए एक साथ प्रिपेयर करें. तो मेगा भी लीगल ऑनलाइन कोर्स में क्या होता है, कोर्स कंटेंट आपके पास अवेलेबल होता है सारे कॉमन एरियाज़ के साथ. अब जैसे ये कंटेंट है कॉन्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, ये सारे एग्जाम्स में जनरली आते हैं. ये कंप्यूटर, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस. लीगल का भी कंटेंट अगर आप देखोगे, जैसे सेबी है, सिक्योरिटीज़ लॉ यहाँ पर दे दिया है आपको. बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम्स के लिए यहाँ पे लॉज दे दिए हैं. कॉमन एक्ट्स फॉर ऑल एग्जाम्स हो गए, कॉन्स्टिट्यूशन, सीपीसी, सीआरपीसी, ये सब कॉमन है, तो ये यहाँ पे मिल गया आपको. तो इस तरीके से अगर आप देखोगे, इवन केस लॉज, वी आर गिविंग यू द प्रैक्टिस क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, एवरीथिंग. So this Mega P Legal online course can be a boon for you if you're preparing for any of the examinations. Do check out the details of all these courses available. If you have any queries, do reach out to us. Don't forget to subscribe to us. Prepare 50% faster with us at iExamB.